Welcome to the last class of our XRD. So, whatever the 2 points are left from our syllabus from XRD, that is nothing but X-ray diffraction. So, whatever these points are there, these points are nothing but very first one point from our syllabus, which is left from XRD, that is nothing but simply structural refinement. And then after we have one next point, and that is nothing but Ramachandran's diagram. And whatever these points are there, these points are explaining us as their heading means, as their heading is. Means what? Structural refinement. What is mean by structural refinement? See, whenever we have the solid at that time, whatever these solids are there, these solids can be explained on the basis of their structure geometry. So whatever these structures and geometries are explained to explain your structure of your solid, these can be explained on the basis of XRD, and we can explain all these things on the basis of our whatever the classes we did, whatever the classes we have covered before today. Means what, how can we explain all the methods? See, there are nothing but simply XRD. What for we are using XRD method? Then after we studied simply in in the next class we studied what are the methods which we can use for the structural identification of our solids. Then after we learn one Bragg's equation, and then after simply we learn about absolute, what is mean by absolute configuration. Then we learn some points which are related with simply single crystal X-ray diffraction method. Then after we studied simply structural factor, then after electron density, then after phase problem, and now we are at the end of our syllabus point of our XRD. Only XRD I am telling you, and whatever these points are there, this point is nothing but simply structural refinement. What is that? Structural refinement. And what is mean by structural refinement? To explain this point, simply आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था, लोगों को लग रहा होगा कि स्ट्रक्चरल रिफाइनमेंट बोले तो कुछ तो हाई फाई वर्ड लग रहा है मैम, तो कुछ तो डिफरेंट होगा इस पॉइंट में। तो बिल्कुल भी कुछ भी हाई फाई नहीं है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। और वो सिंपल पॉइंट बोले तो क्या, तो आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, मतलब कि जैसे कि हमने स्ट्रक्चरल फैक्टर बताते हुए बोला था कि इन स्ट्रक्चरल फैक्टर वी आर रिप्रेजेंटिंग हाउ एंड what is the structure of our solid. Then after we proposed, we simply we means the scientists proposed electron density, and they forward in front of us electron density of about your solids. Then after, a phase problem was there. See, because when we were having even number of your Miller indices values, then after there was no problem to represent your crystal structure. That can be, if you are having any cubic pattern, then you can have their crystal structures like SCC, BCC, FCC. And now I'm not going into the much details of all those points which we have covered. But see, when we were learning about phase problem at that time, I told you one point, that is phase problem was coming for the odd sides or odd FHK values like 5, like 7, and so on. But we just only told, or we just only discussed about the two odd sides of our Miller indices, and that is nothing but FHKL value of 5 and FHKL value of 7. And if you are not remembering just now, then you guys have to go and watch my previous recordings of structure factor and your electron density, then after phase problem. Okay, so let me continue with the point with which I want to discuss with you in today's class. So what's that point? That point is nothing but the simply structural refinement. Structural refinement is nothing but simply जो कुछ भी structure हम हमारे solid का देते हैं, तो वो structure हम किस चीज पे देते हैं। तो आज तक जो कुछ भी सारी चीजें हमने निकाले, for example sorry for the disturbance,
whatever the structures we have determined till today means जो कुछ भी सारे जो कुछ भी सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिटरमाइन किए थे आज तक, मतलब स्ट्रक्चर फैक्टर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और 4 अर्धे डायफ्रैक्टोमीटर से जो कुछ भी यूनिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफाइनमेंट। बट आप लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक स्लाइड की हेल्प लेती हूँ और आप लोगों को समझाती हूँ। जस्ट वेट टिल आई एम लोडिंग दिस स्लाइड, ओके। Structure refinement, yes. Yes. Is slide is visible to everyone? No, ma'am. No, ma'am. Yeah. No, ma'am. So you can, whatever this slide is there, this okay, whatever this slide is there, this slide is showing you the procedure for X-ray structural analysis. And what is mean by procedure for X-ray structural analysis? This is nothing but the structural refinement. What is mean by structural refinement? मतलब कि जो कुछ भी आपके solid का structure है उसको represent करने का पॉइंट बोले तो ही स्ट्रक्चरल रिफाइनमेंट। मतलब क्या, जो कुछ भी आज तक हमने सॉलिड के बारे में क्रिस्टलोग्राफी में भी बहुत कुछ पढ़ा है, अगर से आप लोगों को याद हो रहा होगा तो, और आगे जाकर के हमने एक्सआरडी में भी बहुत सारी बातें की है हमारे सॉलिड के स्ट्रक्चर की बातें, मतलब जो बिना काम की बातें नहीं, स्ट्रक्चर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं सॉलिड का बारे में। तो अब ये जो कुछ भी स्ट्रक्चरल रिफाइनमेंट है, तो ये स्ट्रक्चरल रिफाइनमेंट बोलने से पहले मैं आप लोगों को से एक बात बोलना चाहूंगी जो कि रिलेटेड विद हमारा ये स्ट्रक्चरल रिफाइनमेंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। एंड दैट इज नथिंग बट वेट अ मिनट, वेट गाइस। So whatever this procedure is here for the structure, X-ray structure analysis is here. It is representing you simply the diffraction pattern, which is representing you the crystal, and it can be studied by using the Bragg's law. It can be studied by using Bragg's law. Hello, am I audible? चुकून माझा माइक वरती लागला गेला. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Hello. Okay. खूप वेळ म्यूट झाला होता का माइक? नाही, ma'am. एक जण कुणीतरी. Okay. So now whatever the structural refinement is there, the structural refinement is telling us the parameters of our crystal structure. Now can you guys please tell me what is the basic parameter to explain? What is the parameter? What is the parameter to explain our crystals, any crystal structure or any solid? It is nothing but the, yes, can anybody? वडगावकर मॅडमला शिकवताच येत नाही, काय सांगणार तुम्ही? एक वेळेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोणतंही सांगत असताना किंवा सॉलिडचं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करत असताना तुम्ही सगळ्यात बेसिक आणि इम्पॉर्टंट पार्ट कोणता आहे एक्सप्लेनेशन साठी? स्ट्रक्चर ऑफ सेल. हो, पण ते कशाच्या बेसिसवर सांगता? यूनिट सेल. ओके, मी मराठीत बोलते, यूज करते. किस बेसिस पे बोलते हो आप लोग वो? अरेंजमेंट ऑफ एटम. कशी हा बोल, बरोबर आहे. अजून थोडं पुढे. नेचर ऑफ क्रिस्टल.
थोडं अजून चल पुढं. हे सगळं कशाच्या बेसिसवर सांगतो आपण, नेचर ऑफ क्रिस्टल वगैरे. Dimensional arrangement of येतं की काय 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 3D arrangement of constituents. नो रॉंग. Cube. 3D अरेंजमेंट बरं ठीक आहे. हा ठीक आहे. अजून थोडं चल थोडं इम्प्रूव्ह करा. ती 3D अरेंजमेंट म्हणजे काय? हा 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 काय बोललं? येस आता कोणतरी बोललं. पॅकेजिंग. नाही अजून थोडं पुढं चल. हा? मॅडम एक क्वेश्चन विचारा बरं. माझा क्वेश्चन खूप सिंपल है. सॉलिडचं केव्हाही क्रिस्टल स्ट्रक्चर देत असताना जब कभी भी हम सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताते हैं मॅडम स्ट्रक्चर देते. नाही मॅम. मॅडम मलाच आवाज येत नाही का? सगळ्याच नाही येत आहे. मला काहीच आवाज येत नाही. असं अडकत येत आहे. मला माहित नाही. आवाज येतोय का सर्वांना? हा मॅम येतोय. क्वेश्चन सागर टेरेसवर जा. पण टेरेसवर येऊन बसली. हो मॅडम आलो. हॅलो मॅम. हॅलो मी सगळं हॅलो. बोलला आणि म्यूट. सॉरी मी आन्सर सांगितलं, सगळं सांगितलं आणि म्यूट केला होता फोन. सॉरी. मॅडम त्याचा आन्सर मायक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट ऑफ ॲटम पाहिजे काय? नाही. अरेंजमेंट ऑफ ॲटम म्हणजे काय? चला सांगा. मॅडम काय क्वेश्चन रिपीट. काय ॲटम्सच्या इनसाइडची अरेंजमेंट म्हणजे काय? म्हणजे ॲटम्सच्या इनसाइड जी राहते ती मायक्रोस्कोपिक. बरोबर आहे का? अरे म्हणजे काय ग? बरोबर सांगताय तुम्ही, पण त्याला काही वर्ड आहे की नाही? पिरियडिक कोणता अरेंजमेंट. बोललो आता कोणीतरी एक स्ट्रक्चरल रिफाइनमेंट. युनिट सेल म्हणणारी राखुंडे का? नाही ऋतुजला भंडे. Madam, good beta. Whatever the word I want that you told, and simply whatever the crystal structure is there, that crystal structure can be explained on the basis of a unit cell, and whatever this unit cell is there on the basis cell, when this unit cell is getting repeated in a periodic arrangement, at that time you can get a space lattice, and on that basis you can explain the crystal structure of your any solid. That might be cubic, that might be tetragonal, that might be monoclinic, that might be orthorhombic, etc. Are you guys clear? And all these things we can explain on the basis of structural refinement. Then sorry word chukla माझा. Structure factor I mean to say. Then after electron density, then after we can explain all these things on the basis of simply your arrangement of that crystal, and whatever all these points we have there, that explanation, these points can explain you the bond length of your unit cells, the bond angles. It can be explained vibrational amplitudes, and whatever all these things you can determine by using simply XRD, and then but the X-ray diffraction. This is all about your structural refinement. Are you guys clear? If yes, then please allow me to take your next point, which is the last one point from our syllabus, which is nothing but the reference diagram. Yes, guys, are you clear?
किती कष्ट लागतात तुम्हाला हो की नाही सांगायला पण. एकदा रिपीट करता का? हो एकच मिनिट त्यांना. हा स्लाइड दिसतीये. हो मॅम. थांबा एक मिनिट मी अनोट केलं की ते जाते सगळं. एक मिनिट थांबा हं. हा आय थिंक आता दिसत. So whatever this procedure structural analysis is there, the structural analysis means what? The structural analysis is nothing but the it can be explained on the basis of our crystal structure. मतलब कि ब्रैग्स इक्वेशन वगैरह यूज करके सारे ये जो कुछ भी मेथड्स थे इन सब लोगों को ये सब मेथड्स हम लोगों ने एक्सप्लेन किए. बट ये सारे मेथड्स वगैरह जो कुछ भी थे वो सब एक्सप्लेन करते हुए हम लोग यूज कर रहे थे. क्या यूज कर रहे थे? तो हम लोग यूज कर रहे थे सिंपली एक थिंग and it is nothing but structural factor, electron density, and whatever this single crystal X-ray diffraction was there we were using one instrumentation, computerized instrumentation to which detector is connected, and that is nothing but a very famous method it was, which is nothing but 4-hour diffractometer. And as I told you in my previous class, that is nothing but 4-hour diffractometer is explaining us very vital and vital or important one information regarding solid, and that is nothing but the bond. That is nothing but the unit cell. That is nothing but unit cell. What is mean by unit cell? Unit cell is nothing but the basic criteria. Unit cell is nothing but the basic structural unit of your solid, which is repeated over and over in a periodic arrangement. ये आप लोगों ने 12th standard में भी पढ़ा था. The structural arrangement which is getting structural arrangement means what? Unit cell जब repeat होता है periodic arrangement में तब आप लोगों को solid का crystal structure मिलता है. फिर आप लोग बोलोगे मैडम ठीक है ये तो होता है ऐसे आप बोल रहे हो, फिर हम लोग कैसे मॅम का? मॅम तुमचा आवाज नाहीये. मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही. हो मॅम मला बी येत आहे. आता टेरिसवर आहो मी. नाही परत आवाज mute ब्रेक अरे आवाज ब्रेक म्हणजे म्यूट झाला होता माझ्याकडून. थांबा एक मिनिट मी रेकॉर्डिंगच पॉज करते त्याची. आज काही मला बिलकुल माझं हे दिसत नाहीये. आपण क्लास नंतर घेऊयात का? यस मैम अभी तक आपने जो पढ़ा है समझा नहीं कुछ भी मैम. बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज. नहीं वो क्या हो रहा है पता नहीं, बट मेरा ना माइक्रोफोन ही म्यूट हो रहा है आज. मुझे ही पता नहीं चल रहा है वो बार बार क्यों म्यूट हो रहा है, या फिर मैं यूज कर रही हूँ कुछ मतलब एनोट करना वगैरह तो वहां पर कैसे म्यूट हो रहा है पता नहीं मुझे. हाँ तो हम क्या करते हैं परसों के दिन मिलते हैं.